हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए हमने लिया है आधा किलो खोवा और इसके लिए थोड़ा मैदा 100 ग्राम और इसके लिए दूध। इस वजह से मैश करेंगे, बॉल बनाएंगे इसके लिए। और हम चाशनी के लिए आ जाते हैं। आधा किलो हमने चीनी लिया है और इसके लिए हमने गुलाब जामुन थोड़ा सा और इसके लिए छोटी इलायची पाउडर। आइए हम बनाते हैं इसको। अब हमने पतीला लिया है चाशनी बनाने के लिए और गैस ऑन करते हैं इसको। और इसमें डालते हैं चीनी। और इसके लिए हम 2 गिलास पानी डालेंगे। इसको हम पकाएंगे और देखिए इसके लिए हम डालेंगे गुलाब जल, इलायची पाउडर, इसको हम चलाएंगे। चाशनी पकने के लिए रख दिया वो हमने। अब इसको रख के अब हम बनाते हैं रसगुल्ले। ये देखिए हम खोए को मैदा डाल के हम मिक्स कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे इसमें, मिलाएंगे हम इसको। थोड़ा हम दूध डालेंगे इसमें, मिलाएंगे हम। ज़्यादा दूध डालेंगे तो पतला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे। देखिए हमारा आटा बन गया है इसको। देखिए बन गया है अच्छे से। और हम इसको ऐसे रख देंगे। अभी बनाते हैं हम, तो पहले देख लेते हैं हम चाशनी, हमारी चाशनी कैसे बन गई है। ठीक है, हम ये छोटे छोटे हम बॉल बनाएंगे मीडियम साइज के, बिल्कुल गोल बनाने हमें, जो फटे ना, बिल्कुल सीधा सीधा दोनों साफ साफ बनाना है, जैसे फटे नहीं। ये देखिए हमारा गोल हो चुका है। ऐसे हम इसी तरह से सारे गोल बनाएंगे। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. अब हमारे ये बॉल तैयार हो गए। अब इनको हम फ्राई करते हैं। आइए, अब हमारा तेल गरम हो गया। अब इन्हें तल दें बॉल को। देखिए गुल्ले पक चुके हैं, अब इनसे निकालेंगे।
इसमें डाल दिए और इन्हें से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद देंगे, बिल्कुल सही बनेगी। turn us to thousands, and we'll grow